हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ PKQ एंड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट 10। ओके, इससे पहले मैंने 9 ऑलरेडी करवा रखा है, सो उसे जाके प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका रिवीजन भी होते रहे। एंड रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा माइंड में रखें। ओके, सो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो गाइस। थोड़ा हमें भी तो इंकरेजमेंट मिलना चाहिए ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री ऑफिस। ओके, पार्लियामेंट्री ऑफिस है तो इसका क्या हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ हाउस इज मेंशन इन द रूल of procedure and conduct of business in the Lok Sabha. Is it true statement? Yes, it's a correct statement. Okay, let's come to the next statement, which is the office of leader of the opposition is mentioned in the statute. Yes, it's also correct statement. So both are correct statement. And if we're talking about the another one, which is the third statement, the office of whip is mentioned in the constitution. No, it's not mentioned in the constitution. Okay, so statement third is incorrect. Okay, so answer for this question is option number B, only 2 is correct. Okay, and if you are talking about the whip, which is whip actually में है क्या। whip is a part appointed position responsible for ensuring discipline and decorum among the party member in the house. Okay, the whip's duty, उसकी ड्यूटी क्या है, include ensuring members attend session, vote according to the party lines and generally maintain party cohesion. Okay, और ये सब whip जो है किसके अंदर आता है, वो आता है इंडियन पार्लियामेंट। इसके सेवरल कीज लीडर्स पोजीशन है जो कि प्ले वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग, विच इज़ कौन कौन सी है, लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड whips. Okay, and if we are talking about leader of house, it is a if leader of house अगर लोकसभा में हो, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ इन लोकसभा, देन हेल्ड बाय, ये पोजीशन किसके द्वारा ये किया जाता है, तो हेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। एंड इफ़ दे आर फ्रॉम द लोकसभा, ये और ये प्राइम मिनिस्टर तब होगा जब वो लोकसभा से होगा प्राइम मिनिस्टर। ओके, बट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द लोकसभा, द सीनियर मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी और कोलिजन इज अपॉइंटेड। सीनियर मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी फिर यहाँ अपॉइंट किया जाएगा। ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द राज्यसभा, if prime minister is from Rajya Sabha, senior minister from the government serve this role in the if the prime minister is a member of the Lok Sabha. Okay, and इसकी responsibility क्या होती है, to ensure smooth conduct of government business in the house. Okay, and if you are talking about the leader of opposition, लीडर ऑफ अपोजिशन अभी कौन है वो हमें आप कमेंट में बताएं कि प्रेजेंट टाइम में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। ओके, और ये होता है क्या है, तो दिस पोजीशन इज हेल्ड बाय द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी। ओके, लार्जेस्ट पार्टी ऑफ अपोजिशन टू द गवर्नमेंट दैट हैज़ द सक्सेस, दैट हैज़ द नेसेसरी कितना 10 नेसेसरी स्ट्रेंथ ऑफ 10% टू द टोटल मेंबरशिप टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। ओके, एंड इसका रोल क्या है, तो plays a crucial role in providing constructive criticism. constructive criticism में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, गवर्नमेंट लीडिंग डिबेट्स फ्रॉम द अपोजिशन साइड एंड प्रेजेंटिंग अल्टरनेटिव पॉलिसीज। ओके, एंड ये हेल्प किस में करता है, अपोजिशन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कीज कमिटीज सच एज सेलेक्शन ऑफ कमिटीज फॉर अपॉइंटमेंट टू वेरियस स्टैट्यूटरी बॉडीज। ओके, ये रहा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज with reference to the global great backyard bird count 2024, consider the following statement. Okay, first is
It is organized by the UNEP that collects bird sighting and helps scientists track bird population and distribution. Is it true? No, it's not a correct statement. Let me tell you why. Because it's not organized by UNEP, it's organized by GBBC, which means Global Great Backyard Bird Count. Okay, so first statement is incorrect. Let's come to the next question. It is in India participate in this exercise for the first time in 2024. No, it's not also correct, because India participate in it since 1988. Okay, so statement second is also incorrect. And let's come to the next question, which is sorry, not 88, it's 1998. Okay, 1998. Okay, and so this one is also incorrect. Next is, as per the GBBC, West Bengal reported the highest number of spec- species in India. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is, because there is asking about the correct one, so option number A is the correct answer for this question. Let's come to the, and if you are talking about the Bangladesh, West Bengal, sorry, how much there is present? 538. And India is the top countries in terms of conservation submitted. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the nomination of Rajya Sabha. Okay, nomination of Rajya Sabha member, consider the following statement. First is the president nominated 12 members to the to Rajya Sabha for 6 years. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is, nominated members of the Rajya Sabha have the right to vote in the election of the vice president and president. No, it's not a correct statement. Let me tell you why. Because nominated member of the Rajya Sabha have no right to vote in the election of the president and vice president. So answer is option number A, only one is correct, because second statement is incorrect. Okay, and if you are talking about why it is in news, let me tell you. Recently सुधा मूर्ति, कौन? सुधा मूर्ति इंफोसिस की फाउंडर है, ठीक है, फाउंडर, इन्फोसिस की फाउंडर है कौन? सुधा मूर्ति. ओके, और अभी सुधा मूर्ति को रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी प्रेसिडेंट है, वे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको क्या किए हैं, तो नॉमिनेट किए हैं, नॉमिनेटेड मेंबर इन दी राज्यसभा. ओके, राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट किए हैं सुधा मूर्ति को. कौन? द्रौपदी मुर्मू जी. ओके, और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं. ओके, इंडिया के. और ये पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है जो कि ट्राइबल कैटेगरी से आती हैं, और ये कौन से ईयर है? तो संथाल जनजाति से. ओके, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द रेजिग्नेशन, तो रेजिग्नेशन कहाँ पे दिया जाता है? Resignation, removal by the president for the misconduct or the other reasons, and in the death. And if we are talking about the article 80 clause 1, under the president of India nominate 12 member of the Rajya Sabha for the 6 years. ओके, तो ये कौन से आर्टिकल में है? 80 क्लॉज 1 में मेंशन है. ओके, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये किस बेसिस पे नॉमिनेट किया जाता है? तो वो नॉमिनेट किया जाता है कि कोई लाइक nominated member are individuals with expertise in various fields such as the literature, science, art and social science. Not social science, no, it's a social service. Okay, literature, science, art, social service, ये सब फील्ड में जिसमें ये एक्सपर्टाइज होते हैं उन लोग को ये क्या होता है. बट समटाइम स्पोर्ट्स वाले को भी
लिया जाता है, जो कि एक्सेप्शनल केस है। ओके, सो ये हो गया हमारा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। एंड इसको लिया गया तो पर्पस क्या है? पर्पस of this provision to bring specialized knowledge and expertise into the legislative process. Okay, and if you are talking about the election of the president, okay, election of the president की अगर हम बात करते हैं, election of the president, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वो किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 54 में। ओके, और इसमें क्या होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस, एंड प्लस इसमें कौन आ जाते हैं? तो इसमें आ जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के of the all state, legislative assemblies all state and UTs also. Okay, state and UTs. And if you are talking about the election of the vice president, vice president के election की अगर हम बात करते हैं तो वो आर्टिकल 66 के अंडर आता है। ओके, एंड उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विच इज लोकसभा एंड राज्यसभा in a joint sitting. Okay, or nominated member of the Rajya Sabha are included in this electoral college. Vice president के election time nominated of member of the Rajya Sabha are included, ठीक है, but if you are talking about the presidential election, nominated member are not allowed. Okay, so let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the Registrar General and Census Commissioner in Census Commissioner of India. First is first statement of this question, which is Registrar General and Census Commission of India regarding. First statement is the Registrar General and Census Commissioner of India operates under the Ministry of Statistic and Program Implementation. No, it's not a correct statement because it comes under the Home Affairs. Okay, Ministry of Home Affairs. So statement first is incorrect. Next is the office is responsible for conducting decadal census in India. Yes, it's a correct statement. The sample registration system oversees by this office provides the estimates of birth and death rate. It's also correct. Next statement is the Registrar General and Census Commissioner is involved in maintaining National Population Register. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, which is only 2, 3 and 4 are correct and first statement are incorrect. And if you are using the elimination technique here, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है देन सारा स्टेटमेंट हमारा एलिमिनेट हो जाता था और बिना स्टेटमेंट पढ़े 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट ऑलवेज कीप इट इन माइंड, कितना आंसर आ जाए एक बार स्टेटमेंट सारे पढ़ के देखने हैं। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। ओके, जो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते। ओके, इट प्रिवेंट्स लेजिस्लेचर फ्रॉम द अकम्पलिश इनडायरेक्टली व्हाट दे लैक द जुरिस्डिक्शन टू डू डायरेक्टली। द इंक्रोचमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन हैज़ been discussed in the above paragraph? So वो कौन सा हो जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, नो इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसका हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ कॉलरेबल लेजिस्लेशन। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी विच इज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ये किसके लिए फेमस है? तो ये रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट
Okay. ऑन दी, और ये किस सब्जेक्ट में सेंटर और ये स्टेट की रिजॉल्व डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, तो वो करता है कॉन्करेंट लिस्ट में। ओके, कॉन्करेंट सब्जेक्ट में। और कौन से शेड्यूल में आता है कॉन्करेंट लिस्ट? स्टेट्स कॉन्करेंट सब्जेक्ट कौन से शेड्यूल में आता है, ये आप हमें कमेंट में बताइए। ओके, लेट्स कम टू द another one, which is doctrine of pith and substance, which is option number C, which is related to pith and substance is constitutional validity of legislation based on its true purpose and essential nature rather than its incidental effect. Okay, and it evaluates according to their main objective, preventing misuse of legislative power and promoting legal clarity. Okay, and if you are talking about the third last one, which is doctrine of a harmonious construction, if you are talking about the doctrine of harmonious construction, it mandate interpreting conflicts laws or provisions in a way that reconciles their meaning and preserve their intended purpose. It's promote coherence in the legal interpretation, resolve ambiguities, and fosters consistency in statutory application to uphold the legislative intent. Okay, let's come to the next question. So answer is option number B. Let's come to the next question, which is in the context of Indian Parliament, which is the following statement best describe the kangaroo clause? Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंगारू क्लॉज है क्या? तो कंगारू क्लॉज है टाइप किसका? तो हो जाएगा क्लोजर मोशन का। ओके, क्लोजर मोशन का टाइप है कंगारू क्लॉज। ओके, एंड व्हाट इज क्लोजर मोशन? इट इज अ मोशन मूव्ड बाय अ member to cut short the debate on a matters before the house. If the motion is approved by house, the debate is stopped forthwith the and the matter it is to put vote. ओके, और इसका 4 टाइप होता है। ओके, 4 टाइप का ये होता है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंगारू क्लोजर, ओके, फर्स्ट इज, लेट्स सी विच वन इज करेक्ट। ओके, फर्स्ट इज इट इज वन when the undiscussed clause of a bill or a resolution are also put to put to vote along with the discussed ones due to want time. Is it true? No, it's not a it's not a kangaroo clause, it's a गुलिटन क्लोज। ओके, तो एक इसका टाइप क्या था? गुलिटन क्लोज, ग्लूटिन क्लोजर। सो ये वो हो जाएगा, ना कि कंगारू क्लोजर। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द क्लाउज ऑफ अ बिल इज और अ लेंदी रिजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट। इज इट ट्रू? No, it's not a true statement for this question. This is not kangaroo closure. It's a closure by compartment, which is closure by compartment. Okay, so this one is not correct for kangaroo closure. And next one is only important clauses are taken up for the debate and voting and the intervention clause are skipped overtaken by the past. Yes, option number C is the correct statement, which is kangaroo clause mention. Okay, and if you are talking about the fourth statement, which is it is one when member moves that matter having been significantly discussed be now put to vote, which is a simple closure. Okay, which is simple closure. Okay, so answer is option number C. Let's come to the next question, which is consider the following features, which is how many of the considered unitary feature of Indian constitution? Unitary feature कौन से? Okay, if we are talking about first one, integrated machinery, yes, it's a unitary feature.
And next is all India services, it's a unitary feature, and independent judiciary, it's not a unitary feature, it's a federal feature. Okay, federal feature. Okay, so first statement is, so answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. And if we are talking about the another unitary features, except integrated audit machinery and all India services, another ones is a strong center. Next is single constitution, single citizenship, and integrated judiciary, which is integrated judiciary. And if you are talking about the federal feature, if we are talking about the federal feature, there is a, after the independent judiciary, one, another one is written constitution, another one is bicameral legislation, and नेक्स्ट वन इज डिवीज़न ऑफ पावर्स. ओके, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, तो फेडरल फीचर में. ओके, लेट्स कम, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, और यहाँ पे क्या पूछा, नॉट करेक्ट. सो ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि हमेशा ये देखना है कि वहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा. ओके, सो पहला इज, first statement is the constitution requires that a person, so first statement is the constitution requires that a person must prove his majority in the Lok Sabha before he is appointed as the prime minister. No, it's not a correct statement, क्योंकि आप 6 मंथ के लिए उसके पहले भी बिना अपना मेजोरिटी प्रूव किए भी बन सकते हैं, बट उसके बाद आपको ये चीज़ प्रूव करना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज, अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 मंथ. देखिए, इसी का अपोजिट स्टेटमेंट नीचे दे दिया. ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, विच इज द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, तो एक ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 75. ओके, अंडर आर्टिकल 75. सो आंसर इज ए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, recently government has allotted GI tags to some product in the context product रूपा ताराक्षी. इसमें क्या पूछा है, तो करेक्टली मैच्ड पूछा. ओके, करेक्टली मैच्ड. सो फर्स्ट इज रूपा ताराकाशी. ताराकाशी स्टेट किससे बिलोंग करता है, तो वो बंगाल से नहीं, तो ये करेक्टली मैच है किससे करता है, ओडिशा से. एंड इफ आर टॉकिंग बांग्लार मुस्लिम, ये भी बंगाल से बिलोंग करता है. एंड रीसा टेक्सटाइल त्रिपुरा से. एंड अगर हम बात करते हैं अनदर वन की, असम से भी जीआई टैग मिला है. वो किसके लिए मिला है, माजुली, माजुली मास्क को, एंड माजुली मैनोस्क्रिप्ट पेंटिंग को, एंड माजुली मैनोस्क्रिप्ट पेंटिंग. ओके, एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ़ वी कैन टॉक सम अनदर वन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली वन, विच इज़ ए. ऑप्शन इज द करेक्ट. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द तेलंगाना's GI tags, which is got Hyderabad lac bangles. And if you are talking about from the Gujarat, which is Kutch Rogan craft Nirona, and Ambaji white marble also. Okay, so answer is A. Let's come to the next question, which is, consider the following statements with reference to the power of the speaker in an assembly. First is, the speaker can exercise casting vote only in case of tie. It's a correct statement. Next is, the speaker decide whether the bill is a money bill or not. His decision on the question
is final. Yes, it's a correct statement. Next is the speaker is final interpreter of the provision of the Constitution of India within the assembly. It's also correct statement. So answer for this question is option number C, which is all three are correct. Okay. Let's come to the next question, which is consider the following subject. Which of the following subject were transferred from the state list to the concurrent list? और ये कौन से शेड्यूल में आता है? शेड्यूल 7 में. ओके. List by the 42nd Constitution Amendment Act 1976. ओके. सो फर्स्ट इज एजुकेशन. जी हाँ, एजुकेशन को 42nd अमेंडमेंट करके स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया था. ओके. नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन. ये नहीं होगा बिकॉज ये स्टिल स्टेट लिस्ट में है. ओके. सो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. लेट मी एलिमिनेट. ओके. स्टेटमेंट सेकंड अगर गलत है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज नो. वेट अ सेकेंड. ओके. इफ स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट सो एलिमिनेट कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए एंड डी. ओके. और अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन जिसमें ये देखना है कि स्टेटमेंट 1 सही है और हमें ये पता है कि स्टेटमेंट 1 सही है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये स्टेटमेंट 1 इसी में है. ओके. ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 1, 3 एंड 4. वेट एंड मेजर्स ये भी ट्रांसफ़र किया गया था. प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ ये भी ट्रांसफ़र किया गया था. और पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में आता है. ओके. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 1, 3 एंड 4. ओके आर करेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is consider the following statements, consider the following personalities. Okay. First is in how many of the above post deputy prime minister of India held? Okay. So first is Sardar Vallabhbhai Patel. Yes, it's a correctly. देवीलाल, मोरारजी देसाई, तीनों करेक्ट है. एंड इफ यू आर टॉकिंग जॉर्ज फर्नांडिस, ये नहीं होगा बिकॉज ये थे डिफेंस मिनिस्टर. ओके. डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप किसके? अटल बिहारी वाजपेयी जी के. ओके. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3 इज करेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑपरेशन अंडरटेकन बाय इंडिया टूवर्ड्स इवैक्यूएटिंग इट्स nationals from Haiti to the Dominion Republic is called as. ये किससे निकालने के लिए किया गया था? तो वो था हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था? तो वो था ऑपरेशन इंद्रावती. ओके. ऑपरेशन इंद्रावती यहाँ पे चलाया गया था. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से में आ जाएगा? किससे रिलेटेड है? तो वो इवैक्यूएट किया गया था इंडियंस को फ्रॉम अफगान माइनॉरिटीज़ एंड अफगानिस्तान आफ्टर द तालिबान टेक ओवर. जब वहाँ पे तालिबान आ गया था अफगानिस्तान में तभी ये ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था ताकि वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके. एंड इफ़ आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन गंगा, गंगा किस चीज़ से रिलेटेड था? ऑपरेशन गंगा तो वो रिलेटेड था यूक्रेन से, यूक्रेन रसिया वॉर से, जिसमें से यूक्रेन से हमारे इंडियंस को लेके आने के लिए ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था. ओके. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन मदद किसके लिए था? और जिसको ऑपरेशन राहत भी बोलते हैं, जो कि 2015 में ये किया गया था. और ये किससे रिलेटेड था? तो यमन से वहाँ के इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेनर नेशनल्स, ये दोनों के लिए था. इंडियन सिटीजन और फॉरेनर नेशनल्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन यमन, ये यमन से निकालने के लिए किया गया था. ओके. और ये 2015 में हुआ था. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन गंगा कब हुआ था? ये हुआ था 2022 में. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट देवी शक्ति, ये 2021 में हुआ था. एंड यस, सो दिस वन इज द. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज. So next question is which of the following statement is not correct regarding the no confidence motion. Okay. No confidence motion का कौन सा statement incorrect है? First is
The motion of no confidence can only be moved in Lok Sabha. Yes, it's a correct statement. ये लोकसभा में नहीं हो सकता क्योंकि लोकसभा हमारा परमानेंट है, वो डिसॉल्व्ड। लोकसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है, सॉरी राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है, तो उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता राज्यसभा को। ओके, एंड लोकसभा को किया जा सकता है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज रूल ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा प्रोवाइड अ प्रोविजन रिगार्डिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन। यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज द मोशन, a motion of no confidence need not set out any ground on which it is based. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number D, which is not correct, and there is asking about the not correct statement. After the no confidence motion has been discussed and negated by the house, another no confidence motion can be moved in the same house. Same house में अनदर कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन नहीं आ सकता। सो आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज़ बिन डिस्कस्ड एंड नेगेटेड बाय द हाउस, अनदर नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी मूव्ड इन द सेम हाउस। ओके, सो स्टेटमेंट डी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements with respect to the Ministry of Cooperatives. Okay, Ministry of Cooperatives regarding which a statement is correct. यहाँ पे correct पूछा है। So first statement is the ministry is responsible for providing a separate administrative, legal and policy makers for strengthening the cooperative movement in the country. Yes, it's a correct statement. Next is its principal activities include streamlining process for ease of doing business or for cooperative and enabling development of multi-state cooperative society. It's also correct. So let's answer for this question is option number C. Both are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following information. First is official Attorney General of India is appointed by the President. Yes, it's a correct. And Attorney General of India कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 76 में। okay, and if we are talking about the removal of the Attorney General of India done by the Parliament, no, it's by the President. अपॉइंट भी यही करते हैं एंड रिमूव भी यही करते हैं। ओके, अटॉर्नी जनरल को। एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट, सो स्टेटमेंट्स फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन was appointed by the governor. Yes, it's a correct statement, and removed by the governor, but there is a गवर्नर के द्वारा रिमूव किया जाता है, बट रिमूव्ड बाय द गवर्नर बट ओनली ऑन द सेम मैनर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जज, हाई कोर्ट जज। ओके, जिस तरीके से हाई कोर्ट का जज को रिमूव किया जाता है उसी तरीके से गवर्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जाएगा बाय द गवर्नर। ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, जो चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और रिजेक्ट के मतलब रिमूवल किसके द्वारा होता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज correct statement is third, and answer for this question is, because there is asking for correctly match, so answer is option number A only is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the cabinet secretariat. First is the office of cabinet secretariat was created after the adoption of the constitution to facilitate the smoothing working of business of the government of India. No, it's not a correct statement, because ये कब ये किया गया था कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, तो वो बिफोर किया गया था। ओके, ना कि आफ्टर। सो दिस वन इज पहले किया गया था। कब? तो वो थे सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट ये किया गया था, लाया गया था, एंड ब्रॉट अ चेंज इन द नेम ऑफ दिस ऑफिस विच इज़ 5th of September 1946. द सेक्रेटेरिएट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज डिजाइंड as cabinet secretariat, and secretary
of secretary to the executive council as a cabinet secretary. So ये after नहीं हो जाएगा, यहाँ पे before हो जाएगा. Okay, so first statement is incorrect. Next is the cabinet secretary is the ex officio chairman of the civil service board. Yes, it's a correct statement. Next is the office of principal scientific advisor work under the administrative control of the cabinet secretariat. Yes, it's also correct statement. So answer for this question is option number B. यहाँ पे correct पूछा है, ये हमेशा देखिएगा is correct पूछा है या incorrect. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the United Nations Environment Assembly, consider the following statement. First is United Nations Environment Assembly is the world's highest level decision making body on the environment matter. Yes, it's a correct statement. Next is it was created during the UN Conference Environment and Development Rio Janeiro Summit 1992. No, it's not a correct statement because ये किया गया था. United Nations Environment Assembly was created in 2012 by the outcome of the UN Conference on Sustainable Development Rio+20 held in कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में. Since the establishment, the assembly has unrest in a new era of multilateralism with environmental issues given the same level of importance such as global conference as peace and security and health. Okay, so statement second is incorrect. Next statement is which is all member of the United Nations are members of the UNEP. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements about the Women Business and Law Report. Okay, first is it is an annual report that measures the legal and regulatory framework governing women's economic participation in countries. Yes, it's a correct statement. Next is the report is published by the World Bank. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, which is both are correct. Okay, let's come to the next question. Consider the following statements regarding the electoral college for the election of the president of India. First is और election of the president of India किसमें आता है, आर्टिकल 54 में. Okay, first statement is both the nominated and elected member of the legislative council of state legislature do not part of the electoral college. Yes, it's a correct statement. Next is elected member of the legislative assembly of NCT Delhi and Puducherry are part of the electoral college. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C, both are correct. Okay, let's come to the next question, which is which one of the following are the conditions when a bill is deemed to be money bill in the Indian parliamentary system. First statement is it if it provides the imposition of fines or other pecuniary penalties. No, it's not. It is provide for the demand of payment of fees for license or fees for services rendered. ये भी नहीं होगा. Next, it deals with the exclusively with financial matters including taxation, borrowing and expenditure. Yes, it's a correct. If it provides for the regulation for the borrowing of the money by the union government, it's also correct. So answer for this question is option number B, which is not option number B, option number C, which is 3 and 4 are correct answer. Okay, and if you are talking about the statement 1 and 2, both are related to the a bill not deemed to be money bill when it provides for. Okay, so an imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes. Okay, so answer is option number C, which is 3 and 4 are correct. Let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to quorum of the legislative assembly. फर्स्ट स्टेटमेंट इज और यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट. ओके,
So first statement is the word quorum is not mentioned in the constitution. No, it's not a correct statement because ये mentioned है itself. Okay, so statement first is correct because यहाँ पे not correct पूछा है. And it does not include presiding officer of the house. It does include presiding officer, so ये भी सही हो जाएगा. For any legislative assembly, quorum can be never be more than 50. Yes, it's a correct statement, but ये इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट हो जाएगा. So answer for this question is option number B, which is 1 and 2 are correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following are types of municipalities under the provision of the नगर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इसमें सेलेक्ट करना है म्यूनसिपैलिटी के लिए. नगर पंचायत करेक्ट, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ओके, और महानगर पंचायत नहीं होता है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1, 3 and 4, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये जो टाइप है म्यूनसिपैलिटीज़ का वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो 243Q के अंदर आता है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इज इट ट्रू? Yes, it's a correct statement. No, it's not a correct statement because it's a local self-government. Okay, local self-government. So first statement is incorrect. It deals with the matter of urban local government only. Yes, it's a correct. And it's chaired by the union minister of the Panchayati Raj. No, it's not by the union minister. It's by the state minister. Okay. So statement third is also incorrect. So answer for this question is option number A, which is only 2 is correct. Okay, let's come to the next question. With reference to the wide tunnels, consider the following statements. First is they are used to test airflow properties in aerodynamic space. Yes, it's a correct statement. Next is currently India has only one hypersonic wind tunnel. No, it's not a correct statement because currently India have three hypersonic tunnel. Okay, which is कौन कौन सा वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट इज और वो किसके द्वारा किया गया है, तो इंडियाज थर्ड हाइपरसोनिक टनल वेंट आफ्टर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज DRDO HWT हाइपरसोनिक विंड टनल एट दी कहाँ पे है, तो APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स इन हैदराबाद. एंड उससे पहले था जो कि कितना का है 1.2 मीटर. ओके, एंड TWT विच इज़ नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इन बेंगलुरु. एक तो हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स इन हैदराबाद में, और एक बेंगलुरु में है जो कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इन बेंगलुरु. ओके, ये दो होगा एंड तीसरा वो है. सो 3 हो जाएगा यहाँ पे टोटल, ना कि एक. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, ओनली 1 इज करेक्ट. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ISRO inaugurated massive tunnel at VSSC Thiruvananthapuram. ये थर्ड वन था. ओके, एंड विंड टनल होता क्या है, तो विंड टनल्स आर कंट्रोल्ड एयर फ्लो फैसिलिटीज used to study the aerodynamics characteristic of objects in motion such as aircraft, vehicle and buildings. Okay, एंड इसका पर्पस क्या होता है एंड एप्लीकेशन, तो एरोडायनामिक एनालिसिस होता है इससे, बाउंड्री लेयर स्टडीज होता है, फ्लो विजुअलाइजेशन, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टेस्टिंग. ओके, एंड एक वर्ड आता है ट्राइसोनिक विंड. ओके, ट्राइसोनिक विंड किसको बोलते हैं, और ट्राइसोनिक विंड टनल इज ए स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी डिजाइंड टू सिमुलेट 3 डिस्टिंक्ट फ्लाइट regimes like subsonic, transonic and supersonic, तीनों मिला के.
ओके। और तीनों में डिफरेंस क्या है? तो सब सोनिक्स का जो स्पीड होता है बिलो द स्पीड ऑफ साउंड विच इज लेस देन 1 मैक, एंड ट्रांसोनिक स्पीड इज नियर द स्पीड ऑफ साउंड विच इज 0.8 लेस देन 1.2 मैक। ओके, ये 0.8 एंड 1.2 मैक के बिटवीन में रहता है। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सुपरसोनिक अबव द स्पीड ऑफ greater than 1 Mach. Okay, so answer is option number A. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the vocal for local initiative. First is it is initiative launched by the Ministry of Commerce and Industry in the MSME. Is it true? No, it's not a correct statement because ये नीति आयोग के द्वारा लाया गया था, लोकल फॉर वोकल। ओके, नीति आयोग के द्वारा, एंड सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज द इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज द इनिशिएटिव एम्स टू bolster local economies and promote grassroots entrepreneurship. Also correct. So answer for this question is option number C, which is 2, 3 are correct. Okay, next is consider the following statements. Statement 1 is the value of the vote of each member of the legislative assembly in a state independent on the population of his constituency. So statement first is incorrect. Okay, because the value of the vote of each MLA in a state is determined by a formula based on the total population of the state as per the 1971 census, क्योंकि इसको स्टेबलाइज कर दिया गया है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 से, बिकॉज पॉपुलेशन के बेस पे हम इसको डिटरमाइन करते हैं। और ये कब तक स्टेबलाइज है? तो 26 तक। ओके, 2026 तक अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस। ओके, and next statement is the constitution mandate uniformity in the representation of different states in the presidential election, and this is achieved by the formula based population. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number D, which is statement 1 is correct but statement second is correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following statement with reference to the Solicitor General of India is correct. Okay, first is the Solicitor General is appointed by the Attorney General. No, it's not a correct statement. Solicitor General President के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, and so first statement is incorrect. Next is the office of the Solicitor General is not mentioned in the Constitution. Is it true? Yes, it's a correct statement. Okay, so if we are talking about the attorney general के बाद जो attorney general is the first highest लॉ ऑफिसर, देन आफ्टर आ जाता है सोलिसिटर जनरल जो कि सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, एंड इसका काम क्या था? फुलफिल हिज ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अटॉर्नी जनरल नहीं रहेगा तो उसके जगह पे सोलिसिटर जनरल काम कर सकता है फॉर सम टाइम, इसलिए ये पोस्ट होता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज ओनली 2 इज करेक्ट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First is how many of the above criteria are mentioned in the Indian Constitution for the disqualification of assembly members, which is unsolved mind. Yes, it's a correct statement. Next is a person convicted for any offense resulting in imprisonment for 2 or more years. No, it's not a correct statement because not directly mentioned in the constitution. ये directly mentioned नहीं है constitution में. And next is office of profits, yes, dual citizenship is. So answer for this question is option number C is the only 3 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statement. Directorate of States. Okay, first is it is an attached office of the Prime Minister office to minister and manage the state of government of India. Yes, it's a no, it's not a correct statement because
In 1944, the Directorate of State is attached of the office of the Ministry of Housing and Urban Affairs. कौन सा हो जाएगा? Ministry of Housing and Urban Affairs. It mandated to administer and manage the state of government of India in Delhi. Its 8 regional office located in Chandigarh, Chennai, Faridabad, Ghaziabad, Kolkata, Mumbai, Nagpur and Simla, and 31 other bhi hai. Okay, so first statement is incorrect. Next is administration and booking of venue like Vigyan Bhavan is overseen by the Directorate of State. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B. Only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements. First is, in the S.R. Bommai case 1994, the Supreme Court declared that the Constitution is federal and identified federalism as its basic feature. Yes, it's a correct statement. Next is, the principle of federalism is explicitly mentioned in the preamble of the Constitution. No, it's not mentioned in the preamble of the Constitution. So answer for this question is option number C, which is statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Okay. Next question is joint sitting. Okay. First हो जाएगा, joint sitting is not applicable to the money bill in the Indian Parliament. Yes, it's a correct statement. और joint sitting कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 108 में. ओके. Next is, because money bill can only be introduced in the Lok Sabha and Rajya Sabha has limited powers concerning them. Yes, it's a also correct statement. So answer for this question is option number option number A, which is a statement both 1 and 2 are correct, and statement second is the correct explanation of statement 1. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the lapsing of the bill upon the dissolution of the Lok Sabha. Okay, first is, a bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. Yes, it's a correct statement. Next is, a bill pending in the Rajya Sabha but not passed by the Lok Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha. It's डिसोल्यूशन होगा? नहीं, ये डिसोल्यूशन नहीं होगा. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए ओनली इज करेक्ट. ओके, एंड if you are talking about the lapse of the bill, so let me tell you the conditions. bills originating, अगर बिल हमारा लोकसभा में ओरिजिनेट होगा तो इसके लैप्स होने के कौन कौन से कंडीशन हो रहे हैं? अगर वो पेंडिंग है लोकसभा में, इफ़ अ बिल इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन इन द लोकसभा एंड द हाउस इज डिसॉल्व, द बिल लैप्सेस. ओके, एंड अगर पास हो जाता है लोकसभा में बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, तब क्या होगा? तो इफ़ अ बिल इज़ पास्ड इन द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, तो ये बिल क्या हो जाएगा? लैप्स. ओके, क्योंकि लोकसभा जो पास किया था वो तो डिसॉल्व हो गया, तो ये बिल ये हो जाएगा, मतलब लैप्स हो जाएगा. लोकसभा लैप्स हो गया तो ये डिसॉल्व हो गया. ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बिल जब ओरिजिनेट होता है राज्यसभा में. ओके, इफ़ द बिल इज़ ओरिजिनेट इन द राज्यसभा, तो क्या होता? अगर पेंडिंग है राज्यसभा में, इफ़ अ बिल ओरिजिनेट एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा, it does not lapse upon the dissolution of the Lok Sabha. This because the Rajya Sabha is permanent body and not a subject to dissolution. Okay, so statement 1 is correct and ये dissolved नहीं होगा. So answer is option number A. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the speaker of the Lok Sabha in India. First statement is, और इसमें क्या पूछा है? Incorrect पूछा है. It means not correct. Speaker makes subscription to the separate oath and affirmation. Yes, it's a correct statement. नहीं, ये correct statement नहीं है. The speaker is elected by the member of Lok Sabha from amongst the people. Yes, it's a correct statement. Next is, he can removed only by the resolution passed by the Lok Sabha in absolute majority. No, it's not a correct statement. So answer is option number B, which is
नॉट करेक्ट. ओके, दो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज with reference to biodiversity beyond the national jurisdiction treaty, consider the following statement. Okay, biodiversity beyond the national jurisdiction treaty. First is it is legally binding treaty. Yes, it's a correct statement. Okay, and BBNJ treaty covers part of the ocean that lies beyond the exclusive economic zone of a country. Yes, it's also correct statement. Next is India has signed and ratified the treaty. No, it's not a correct statement क्योंकि अभी तक इंडिया साइन नहीं किया है इस ट्रीटी को. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी क्यों इंडिया साइन नहीं किया है, तो क्योंकि इट्स अ फर्स्ट इज कंसर्न ओवर रिसोर्सेज शेयरिंग, इससे रिसोर्स शेयर करना पड़ेगा. सोवर्निटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नीड फॉर स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म एंड लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इस रीज़न की वजह से नहीं किया गया. होगा. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीटी का जो की एलिमेंट्स है उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा. उसमें मैरीटाइम मराइन प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाएगा. एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग होगा. कैपेसिटी बिल्डिंग होगा. एंड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बेस में किया जाएगा. ओके, सो आंसर इज option number C, which is only 1 and 2 are correct. Okay, let's come to the next question, which is in terms of arrow 2 and 3, David's sling sometimes seen in the news is related to missile defense system जो कि इसराइल का है. ओके, इसराइल का है. So answer for this question is option number B, which is missile defense system, okay, of Israel. Let's come to the next question. Consider the following statements regarding the function of the Vice President of India. Okay, function of the Vice President of India. First is when the post of president falls vacant, the vice president succeeded to the post of remainder of the terms of the president. No, ये रिमाइंडर टर्म्स के लिए नहीं होगा. विद इन 6 मंथ इसको ये करवाया जाएगा और जितना वो 5 साल के लिए होगा फिर. ठीक है, रिमाइंडर टर्म के लिए नहीं होगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और ये विद इन 6 मंथ इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटैच्ड नो फंक्शन ऑफ द ऑफिस of the vice president. Yes, it's a correct statement. Next is the election of the vice president is declared void by the Supreme Court act done by him prior to the date of such a decision remained valid. Yes, it's also correct under Article 71. Okay, let's come. So answer for this question is option number B, which is only 2 and 3 are correct. Okay, let's come to the next question. Consider the following officials. How many above officials are not liable to any court for acts performed in the charge of official duties according to the Article 361 Constitution, which is president and governor of UTs नहीं किया जाएगा. एंड बाकी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉट एप्लीकेबल हेयर. इन लोग पे किया जा सकता है, नॉट एप्लीकेबल हेयर. ओके, so answer is option number B, only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is the president of India grant pardon, reprieve, respite and remission of the punishment of any person convicted by any offense for which of the following cases. Okay, first is in all cases where punishment or sentence by the court martial. Correct. Next is in all cases where punishment or sentence is for an offense against union and state. नो, प्रेसिडेंट सिर्फ यूनियन में कर सकते हैं, मीन सेंटर में कर सकते हैं, स्टेट का गवर्नर करेगा. ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज सेंटेंस डेथ. ओके, सो प्रेसिडेंट कर सकता है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज 1 and 3 आर करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज in the context of Agni Prime, consider the following statement. First is Agni Prime is
characterized type of ballistic missile developed by India. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is it is capable of carrying both conventional and nuclear warhead. Yes, also correct. Next is missile has range 4000 to 5000. ये incorrect हो जाए क्योंकि 1000 to 2000 के रेंज में हो गए 2000 के रेंज में सो स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रांट गिवन बाय द center to the state government. First is the constitution empowers the central government to make grants of the state which require financial assistance. Yes, it's a correct statement. Next is discretionary grant under the 282 can given the public purpose. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Only 1 and 2 are correct. Okay, let's come to the next question, which is type of grant. Meaning supplementary grant, granted when funds allocated for the particular service are found to be insufficient during the financial years. Yes, it's a correct. And additional grant is grant when there is required to meet the expenditure on a new service not foreseen at the time of the presentation of budget. Yes, it's also correct. Next is excess grant, granted when expenditure for the financial year exceeds the amount of original allocated. So answer this is also correct. So answer for this question is option number C, which is all three are correctly matched. Okay. Next is recently the Cabinet Committee on Security has approved for advancement of medium combat aircraft in the context of following a statement about the advanced medium combat aircraft. First statement is it is indigenously designed fifth generation multimodal fighter jet. Yes, it's a correct statement. Next is it is incorporated advanced strength technology to evade enemy radar detection. Yes, it's also correct. Next is currently US is the only country that have the fifth generation fighter jet. No, not only have the US, चाइना के पास भी है एंड रसिया के पास भी. ओके, एंड चाइना वाला का नाम क्या है तो J-20 माइटी ड्रैगन एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रसियाज वन इट इज सुखोई Su-57. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B, which is only 1 and 2 is correct. Let's come to the next question, which is consider the following statement with reference to the Attorney General of India. A candidate who is to be appointed as the Attorney General of India should be eligible to be judge of the Supreme Court. Yes, it's a correct statement. Next is the term of his office has not been provided for the Constitution of India. It's also correct. So answer for this question is option number C, which is 1, 2 are correct. Both are correct. Okay. Let's come to the next question, which is consider the following temples regarding the Shankaracharya temple. Temple is located in the valley of Kashmir. Yes, it's a correct reason. Temple is dedicated to Lord Shiva. It's also correct. And the temple is ancient temple is built in the indigenous Nagra style architecture. No, it's not a correct statement because ये नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर में नहीं बना है, काश्मीरी स्टाइल से बना है जिसमें कि सिहारा स्टाइल ऑफ प्रोमिनेंट एविडेंस मिलता है एंड हॉर्स शू आर्क टाइप ऑफ पैटर्न बना हुआ है. ओके, सो फॉर थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी गाइज, थोड़ा आज नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि साइड में कंस्ट्रक्शन कहीं पे चल रहा है, सो थोड़ा सा मैनेज कर लेगा. बस कुछ ही क्वेश्चन बचा हुए हैं. सो नेक्स्ट question is consider the following statements regarding the duration of panchayat as per the part 9 of the Indian Constitution. First is the Constitution provide fixed tenure of 5 years
for the panchayat from the date of declaration of election. ये date of declaration नहीं होगा, date of appointment होगा. Okay, so first statement is incorrect. Next is a new panchayat constituted after the dissolution of panchayat shall continue only for the remainder of the term of the dissolved panchayat. Yes, it's correct. Next is it is not necessary to hold a fresh election for the constitution of a new panchayat for the remaining term in if the remaining tenure for the dissolution panchayat is less than 6 months. अगर 6 months से कम रहेगा टेन्योर का तो वो वहाँ पे री इलेक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6 मंथ में हो जाएगा तो फिर बार बार क्यों करवाएं. So statement third is also correct. So answer for this question is option number B. Only 2 is correct. Okay. Let's come to the next question, which is consider the following statements. In how many of the above countries joined NATO इन 75th एनिवर्सरी. 75th एनिवर्सरी में कितने कंट्री नेटो को ज्वाइन किए हैं? तो वो एक कंट्री है, वो है स्वीडन. ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी नेटो, अभी कितना 32 नेशन है, 32 मेंबर है इसमें टोटल. एंड ये फाउंड कब हुआ था? 1949 में. एंड इसका एम क्या है? तो एक्टिंग एज अ डिटरेंट टू द थ्रेट ऑफ सोवियत एक्सपेंशन इन यूरोप आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ओके, और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब से कब हुआ था, उसका ड्यूरेशन क्या था. ओके, एंड नेक्स्ट इज फ्रांस, डेनमार्क एंड यूक्रेन. यूक्रेन तो अभी लड़ रहा है अपना ये के लिए, नेटो को ज्वाइन करने के लिए. एंड इसका फाउंडिंग मेंबर कितना है नेटो का? तो वो 12 फाउंडिंग मेंबर था. कौन कौन? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल एंड यूके एंड यूएस. ओके, एंड इसका लास्ट में जो अभी फिनलैंड कब ज्वाइन किया था? फिनलैंड किया था 2023 में. ओके, एंड फ्रांस तो हो जाएगा, ये फाउंडिंग मेंबर है फ्रांस एंड ये डेनमार्क, तो ये तो ऐसे भी नहीं हो जाए. यूक्रेन अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो स्टेटमेंट ओनली 1 इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन ए. एंड यस, so let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the censure motion. Okay, censure motion के बारे में अभी हमने कुछ टाइम पहले ही इसका क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो कि 4 टाइप का था. ओके, सो आज फिर से देखते हैं सेंसर मोशन. इसमें और नॉट करेक्ट पूछा. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज it highlights the general causes of the dissatisfaction rather than the specific grievances. No, it's not a correct statement. It cannot be introduced in the Rajya Sabha. It can be introduced in the Rajya Sabha, so ये भी गलत हो गया. The passing of the censure motion does not necessarily lead to the resignation of the government or the minister. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option B. ओनली 2 इज़ करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था और 2 स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हाउ मेनी ऑफ द डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन मैंशनड अबव द डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्जेस. ओके, फर्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. जी हाँ. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. जी हाँ. एंड नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को चेयर तो करते हैं प्राइम मिनिस्टर, बट ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर नहीं आता है. ओके, सो स्टेटमेंट थर्ड इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि ये हेडेड बाय मतलब ये ऑपरेट अंडर किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. So statement third is incorrect. Next is cabinet secretariat. Yes, it's also. So answer for this question is option number C. Only 3 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements. First statement is salaries and allowances of the minister in state are determined by the state legislature. Yes, it's a correct statement. Next is a minister's service only the salary and allowances that are payable to the member of the state legislative. No, it's not a correct statement, because
The a minister receives the salary and allowances that are payable to a member of the state legislature. In addition to these basic remunerations, a minister is entitled to several other benefits also, not only this one. Okay, so answer for this question is option number C. Only statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Okay, so answer is option number C. Let's come to the next question, which is with reference to the Rajya Sabha, consider the following statement. First is Rajya Sabha election are conducted using a secret ballot. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is MLA defying the party line while voting cross voting for a Rajya Sabha member can be disqualified under the anti-defection law. No, it's not a it member cannot be disqualified under the anti-defection law because की एक्सेप्शन एग्जिस्ट इन दिस केस राज्यसभा क्रॉस वोटिंग. ओके, उसमें क्या हो जाएगा, अंडर द 10th शेड्यूल विच इज़ किससे आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट से आया था 10th शेड्यूल. ओके, और वो बात करता है एमएलए एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में. एंड एज एमएलए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली cannot be disqualified for the voting against their party line in the Rajya Sabha election. Okay, so statement second is incorrect. So answer for this question is option number A. Only one is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the cantonment board. Okay, cantonment board के regarding कौन सा statement सही है. So first is it is an executive body created to administer the civilian population in the cantonment area. Is it true? No, it's not a correct statement because a cantonment board is established to administer and manage the civilian population living in cantonment area. It operates per the provision of the Cantonment Act 2006 and falls under the jurisdiction of the Union Defense Ministry. Okay, so first statement is incorrect. Next is the cantonment board consists of the elected and nominated member. Yes, it's correct. The executive officer of the cantonment board is appointed by the president of India. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B. Only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to member of the legislative council. First statement is a retired member is eligible for re-nomination. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is a person can be qualified for the governor's nomination. He must be a resident in the concerned state. Yes, it's a correct statement. Next is the member must be not less than 25 years of the age. No, it's not a correct statement. It's a 30 years. Okay, so answer for this question is, क्योंकि यहाँ पे member of legislative council का बात करें तो उसके लिए 30 years required है minimum. Okay, so answer for this question is option number C, which is only 1 and 2 are correct. Okay, so ये रहा आज का 10th जो टेस्ट था उसका कंप्लीट हो चुका है. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस. इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी वहाँ पूछ सकते हैं आप. एंड आप हमें कमेंट में ये बताएं कि इसके बाद हम नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट सीरीज़ करें स्टार्ट, या फिर इसके आगे जो भी विजन आईएएस का टेस्ट है वही कंटिन्यू करें. ओके, लेट मी नो in the comment. Okay, thank you so much. If you like the video, like, share and subscribe to my channel. Okay.